Hello, friends. Good morning to all. How are you? All are fine at your home. So, we move to the next textbook questions. So, our next question is: which of the following strategies most important safety precautions for infant? सबसे most important safety precaution क्या है infants में? First one is positioning the infant on its back to sleep. Child proof proofing the home against poisoning, preventing animal bites, breastfeeding. The first one, positioning the infant on its back to sleep. तो सोतना है इसको बैक मतलब बैक नीचे और फ्रंट फेस ऊपर होनी चाहिए. प्लेसिंग द इन्फेंट स्पाइन for sleep is associated with a decreased incidence of sudden infant death syndrome, a leading cause of death in infant. Child proofing the home against poisoning is important for the mobile infancy who are crawling and climbing. Preventing animal bites, while important, it is not only important for the infant who is exposed to pet and animal. Breastfeeding is important for the whole infant, but parents to nourish. Although certain safety measures are relevant regarding prevention, aspiration and suffocation और एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए बच्चे को जो है वो सुपाइन पोजीशन में ही लेटाना चाहिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग फॉल इन एल्डर अडल्ट्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है फॉल का एल्डर अडल्ट्स में? स्कैटर रग ऑन फ्लोर, recessed lightning, stairs, overall physical strength and normal condition. Fourth one, overall physical strength and normal condition. Chronic illness related to mobility, cognitions and sensory impairment contribute to fall in elder adult more than any other specific factors. Maintaining the optimum physical strength and mobility are vital goal of nursing elder individual, while practical matters such as rubber stripped tubes and shores floor free of scatter rug, good lighting, handrails and raised toilet are all specific measures to enhance home safety and ambulatory and mental alert adults the most important variable. Overall physical strength और नॉर्मल कोग्निशंस. नॉर्मल कोग्निशन के बच्चे में अडल्ट्स में तो उसकी जो फॉल का जो फैक्टर है वो कम होगा. बच्चे को समझ होगी और फिज़िकली स्ट्रेंथ मतलब फिज़िकली फिट होगा, उसको समझ होगी हर चीज़ की, तो वो सब फॉलिंग के चांसेस वो कम होंगे. इसलिए बच्चे को मेंटली और फिज़िकली फिट बनाना है. बीच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट करंट थेरेपी रिलेटेड टू पॉइजनिंग एंड ड्रग ओवरडोज. पॉइजनिंग और ड्रग ओवरडोज की करेक्ट थेरेपी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Pace syrup is indicated in most overdose situations, including children. Parents should be instructed to bring the actual container of the product ingested to the emergency room. Emesis is superior to activated charcoal administration for decontamination of the poisoning. Medication-induced catheterization is superior to other form and decontamination is more situation. The correct answer is second one. Parents should be instructed to bring the actual container of the produce ingestion to the emergency room. Emergency provider need to see the actual container that so that the proper analysis and treatment of the overdose can be occur. इमरजेंसी में मतलब हमें एक्चुअल कंटेनर ही लेके आना है मेडिसिन का, ताकि कोई ओवरडोज के उसकी ट्रीटमेंट वो प्रॉपर की जा सके. पेरेंट्स माइट नॉट नोन हाउ मच टाइम हैज़ एस्केप सिंस इंजेक्शन माइट नॉट नोन वेदर द इंजेक्शन एजेंट इज
corrosive syrup is not recommended at home for the children. Emesis has not been shown to improve client outcome in most home situations and is not superior to achieve charcoal. सो इसका करेक्ट आंसर जो है, हमें इमरजेंसी रूम में जब भी कोई कंटेनर मेडिसिन लेकिन उसकी एक्चुअली कंटेनर ही प्रोडक्ट लें ताकि जो प्रॉपर एनालाइसिस और ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सके वो डोज की। आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर एस्टेब्लिशिंग ABC airway breathing circulation for the snake bite victim, the next response by the nurse should be, next response क्या होना चाहिए ABC के बाद? Lens the puncture sites and withdraw as much venous as possible. Stabilize the affected site by splinting. Apply an ice cube. Mark the site of invenomations with a pen. Fourth one is the correct emergency care beyond ABC, including marking the site of invenomations as soon as possible to determine the degree of spread or swelling. उस एरिया में कितनी swelling spread हो रही है को मार्क करने के लिए हमें उसके जो मार्क लगाना चाहिए. इन seasonal drainage of food rice are not currently recommended. However, splint an affected part is recommended if does not delay transfer to the emergency faculty. Next question is teaching a balance class about preventing snake bite injury including all of the following information except. तो कौन सी information नहीं देनी चाहिए बाकी छोड़ के? Wear boot when walking in endemic area. A snake can strike the distance to about half its length. Never put your hand where you cannot see. Striking reflex of the snake remain present for up to an hour after death. Striking reflexes कौन सी information जो नहीं देनी? A snake can strike the distance of about half its length. Snake can strike the distance of about half its length. Since the length of the snake vary, the striking distance vary. For example, a snake 4 could strike at distance of 2. मतलब कितने डिस्टेंस में वो स्ट्राइक कर सकता है, मतलब काट सकता है. तो जो जितनी लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए. सो थैंक यू फ्रेंड्स. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ. हैव अ नाइस डे.